Welcome to Manika America. Today's vlog is a special one. We're taking you inside a heartfelt and soulful celebration at Raj Khalsa Gurudwara in Sterling, Virginia. But before we dive in, don't forget to subscribe to my channel, Manika America, and hit the bell icon so you never miss an episode. We've got many more inspiring and uplifting stories coming your way. This program is proudly sponsored by Sai Mortgage, your trusted partner in home financing. Big Dreams Enterprise, making bold ideas a reality. Capital Films LLC, telling stories that matter. South Asian Business Council of Virginia, empowering businesses, uplifting communities. Dua Jewelers, where tradition meets timeless elegance. And Anasuda Community Kitchens, spread love through food. This beautiful event marked the launch of Sewa Law and the 10-year anniversary of Masala Beats, hosted by the incredible Sunila Bali. I've seen Gurudwaras in Bollywood films, but stepping into one for the first time, it was something truly powerful. The peace, the humility, the welcoming spirit, it was everywhere. People from across the DMV came together to pray, connect, and share a sacred meal. I was joined by my good friend Veer. एजबन के गुरुद्वारे में आए हैं। यहाँ पे इनका वेज बुफे होता है। इसमें आपको बड़ी मज़ेदार किस्म की घर की रोटी मिलेगी, ज़बरदस्त राइस मिलेंगे, दाल मिलेगी, सब्जी मिलेगी, सैलेड है और दही बूंदी वाला रायता है। And let me tell you, the food was amazing. It wasn't just tasty, it was soulful, cooked with devotion, and served with love. And as I soon learned, it had been prepared since 6 a.m. Sunila Bali herself gave us a behind-the-scenes tour of the kitchen. Her commitment to community service, hospitality, and tradition is truly inspiring. She also introduced us to Sewa Law, her new venture focused on empowering the community through legal support, justice, and access. And of course, it was a celebration of 10 vibrant years of Masala Beats, a platform that has united culture, music, and community in the most joyful way. The atmosphere was electric but filled with warmth. This felt less like an event and more like being embraced by a big, loving family. Good morning. I'm Sunila Bali. और आज हम यहाँ राज खालसा गुरुद्वारा में पाठ और लंगर कर रहे हैं। आज दो खुशी के मौके हैं। एक तो हमारा मसाला बीट्स जो बैंड है उसके 10 साल पूरे हुए हैं और दूसरा हमारी लॉ फर्म सेवा लॉ शुरू हुई है, तो उसके लिए शुक्राना भगवान का, वाहिगुरु का। एंड यू नो वी ऑर्गेनाइज पाठ and लंगर टुडे। सो कम्युनिटी किचन होती है गुरुद्वारा में, लोग आते हैं, 800-1000 लोग आते हैं और फिर सुबह से लेके एक्चुअली 2 दिन पहले प्रेपरेशन शुरू होती है। तो पहले सारी ग्रोसरी खरीद के फिर एक दो दिन पहले आगे सारी तैयारी की जाती है, सब सब्जियां वगैरह काटी जाती है, मसाले तैयार किए जाते हैं। और आज सुबह 6 बजे से हम लोग कुक कर रहे हैं। सब लोग जो आते हैं यहाँ पे जरूर प्रसाद खाते हैं। तो मसाला बीट्स के साथ जो नया बिजनेस है वो सेवा लॉ फर्म है। ये जनरल प्रैक्टिस लॉ फर्म है, जिसका मतलब है कि हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस एरियाज इसमें कवर करते हैं। इमिग्रेशन से लेके रियल एस्टेट से लेके एस्टेट प्लानिंग, जिसमें कि आपके विल्स और ट्रस्ट आते हैं, फैमिली लॉ, बिजनेस लॉ की लोगों को जो ज़रूरत है, और उसके अलावा ट्रैफिक टिकट्स, मिसडिमीनर, जो भी आमतौर पे हमारा गोल ये है कि आमतौर पे जो आम इंसान है उसकी कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो हम उसको हेल्प कर सकें, उसकी मदद कर सकें। सो इट्स अ जनरल प्रैक्टिस लॉ फर्म एंड यू नो आप सबकी दुआएं चाहिए। स्पेशल इन्विटेशन भी होते हैं, मगर ये तो रब का द्वार है, खुला ही रहता है। यहाँ पे हर संडे ही ऑर्गेनाइज करता है, कोई ना कोई आगे बढ़ के प्रिपेयर करता है। और नहीं भी हो करने वाला तो गुरुद्वारा की जो कमेटी है वो अपने से करती है। यहाँ सब लोग वेलकम हैं। आप लोग आए हैं, आप लोग मुस्लिम हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज आप हमारे यहाँ फेथ की मीटिंग में आए हैं। और दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट अमेरिका की ट्रू रिप्रेजेंटेशन क्या है। यहाँ पे लोग कहीं से भी आए हो, कोई भी हो, सब मिलके रहते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे रिलीजन को अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक यू फॉर यू फॉर कमिंग मनिका अमेरिका, दैट्स कवरिंग इट। आई थिंक दैट मीन्स अ लॉट। आप और वीर भाई आए, सो थैंक यू। और मगर यहाँ पे कोई भी आ सकता है और ये प्रोग्राम हर संडे को सुबह तकरीबन 10 बजे से किचन खुली होती है। और इसके अलावा फ्राइडे शाम को भी कोई भी हो, यहाँ कोई पूछता नहीं, नो क्वेश्चंस। आप सब कभी भी आए, यहाँ रह सकते हैं, यहाँ खा सकते हैं, यहाँ आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको मिलेगी। You know, it's my mom's event. She started a law firm a couple months ago, and she's been working tirelessly to keep it afloat. You know, reach out to people, and her motto is all about service. I mean, it's in the name, Save Allah. It's her principle has always been about service, being there for people who, you know, might need that sort of help, that legal support. You know, so that's what she's always been about. I think this event is just a good idea it's a good way of, you know, expanding outreach, letting people know
that they have that sort of resource available, people like her who can, you know, be there to help her in all kinds of situations. She's one of few Indians in the legal field. There's not a lot of representation there. So I think this event is a great way of also showing a lot of the Indian population that there are, you know, fellow Indians as lawyers. So I think it's a great place to raise awareness. वीर भाई जी, पहली दफ़ा जो है मैं सिख टेम्पल में ये इनका ज़बरदस्त किस्म का बफे स्टाइल वेजिटेरियन फूड खाने वाला हूँ. I'm very very excited about it and many congratulations to Sunila Bali and her team and may God bless her और उनका बिजनेस जो है सक्सेसफुल हो, वो हमेशा आगे बढ़े, हमारी कम्युनिटी की हेल्प करती रहें. And Sunila Bali ji, thank you for your support, thank you for your leadership, and thank you for what you do for our community. Thank you. And I'm gonna enjoy this buffet style vegetarian food at Sikh Temple. See, I'm hungry. Congratulations, Sunila. Congratulations, Sunila. Congratulations to Sunila on Sevala launch and all the very best for Sunila ji and Safna ji. Congratulations. Congratulations, Sunila. Congratulations to Masala Beach, to Sevala on this amazing new start again on the Sevala. Congratulations. Congratulations, Bodh Mubarak. Thank you. This is an amazing opportunity. Thank you to the Seva Law Firm for offering this day to everybody to celebrate their anniversary in such a fine way at the Gurudwara. What a blessed day. I'm so honored, Leela, for doing this because you would have never had a chance to come over and do this in the presence of the Lord. This is amazing. Thank you so much. May great things happen to great people in the name of Guru Nanak. Thank you very much. Now I truly understand what they mean when they say food at a Gurudwara feels like home, because it's made with Sewa, selfless service, and as Sunila Bali reminded us, this place is open to everyone. Thank you, Sunila Bali and the community of Raj Khalsa Gurudwara. This was an unforgettable day. Friends, I hope you enjoyed today's program. My message is simple. We are one of the most powerful and united communities in the DMV area. No matter your religion, background, or nationalities, at the end of the day, we are all human beings. And what unites us is love, respect, and service.